Very good evening to both of you. As you know, my name is Ankita. I am based in Bangalore, uh, and I have experience of 3 years, more than 3 years, as quality engineer. I hold BTech degree in computer science and engineering from Narayana College of Engineering and Technology. Currently, I'm working on e-commerce domain project where I utilize Selenium with Java-based tools and within Agile framework. Uh, I'm passionate about my work and I'm eager for this new position as it perfectly aligns with my career goals and my aspirations. I I'm eager to take on new challenges and contribute in the success of the organization as well as my growth as a software engineer professional. Okay. How to handle drop-down list? Sorry, sir. How to handle drop-down list? Okay. A drop-down list is a web element, which is like the name suggests, it's a drop-down arrow wherein we can click and we can find so many options to choose from. So in order to handle the drop-down arrow, we use select class. Within select class, we can use the tag name select, and within select class tag, there are options. Okay. How to perform double click? We can perform double click using the action class. Action class provides us the option to uh, control the mouse and keyboard operation. We need to send in the driver reference in the action class object while we are making action class object. We need to send in the reference variable of driver. So for double click, we have actions, double click method. How to And open should I new give you the window? syntax as well? No. How to open new window? Hmm. Open a new window. Okay, open a new window. We can open a new window using the new window tab, and the syntax will be driver dot manage dot window and window type dot tab. Sorry, window type dot domain. Sorry, window type dot window. What is the difference between implicit wait and explicit wait? Implicit weight is a global weight, meaning that it is applied to all the elements that is available on our script. It only affects find element and find elements. And by default, the value is 0. Once we apply the implicit weight, we cannot change it. However, the explicit weight is applied only on specified web element. And once it's not able to find the in both of them, like in implicit weight as well as in explicit weight, if they are not able to find any web element, it comes up with the exception like no such element found or timeout. It gives the exception error. How to perform right click? Right click action can be performed using the action class, and we have a method as uh, context click context click actions context click. That's the method using which we can perform the right click. Okay. How to count radio button? Hmm. Okay, radio button is select tag. Okay. Radio button is available in select tag, and in order to, sir, can you repeat the question? How to count radio button?
Okay, we have a method as get options using which we can we can get the elements of the uh, radio buttons and and on that once we get the list of the options that is available in radio button, we can use dot size on that um, list. We can use dot size on the list that will give us the size of the list in the radio button. What is the difference between find element and find elements methods? Find element and find elements both are the method of WebDriver. In find element, find element is used to find only single web element on the web page. However, find elements is used to find multiple web element on the web page. In find element, the return type is web element. However, in find elements, the return type is a list. In case there is no element found, then um, find element returns an exception, no such element, and find elements return an empty list. Okay. How to integrate browser driver without WebDriver manager class? How to We integrate? How to Okay. integrate? Yeah. Okay. So your question is how to integrate WebDriver without Yeah. WebDriver Manager Yeah. class. Yeah. Okay, in version 4.6.0, the WebDriver Manager was replaced by Selenium Manager, wherein it was already embedded in the Selenium Manager. It was means the WebDriver Manager was already embedded in the Selenium Manager, and due to which we don't need to write the whole thing like the traditional method of integrating the web browser. We simply use a syntax as WebDriver, then reference variable driver equal new Chrome driver, and then this is how we initialize and this is how we integrate. Okay. How to generate alert pop-up? Okay, sir, I don't know this question. I haven't done in JavaScript executor. Okay. How to zoom web page? Okay, uh, we use the syntax driver dot manage dot windows dot maximize, wherein Windows is the Windows is a method within the options and within options we have manage option manage. Okay, yes, sorry. So a manage is a method of WebDriver, and Windows is a method of options interface with the help of which we can zoom in and zoom out, maximize or minimize the window. The syntax will be driver dot manage dot windows dot maximize. Okay. What is the difference between frame and iframe? So uh, we okay, our web page is divided into several elements. Each element is known as frames. It is introduced because if their whole web page is taking some time to load, then it won't affect the loading of other frames. Whereas the iframe is actually a frame wherein as external source is embedded. Meaning, for example, if we see a web page and we find like YouTube video or some external like ads going on from other web page, then it comes under iframe. And in order to handle iframe, we use switch to method. And switch to method is a method of WebDriver. Okay. And with iframe can be located either by ID, class, or name, or by the element.
अंकिता, काफी अच्छा इंटरव्यू दिया आपने ना। तो आपका मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ठीक है ना, मैं जो सोच रहा था मेरी सोच से ज्यादा अच्छा आप लोगों ने इंटरव्यू दिया। ठीक है ना। थैंक ये यू मान सर। के चलना, जो आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो मतलब कि आप वहीं नहीं रुक जा रहे कि एक एक लाइन में मुझे आंसर खत्म करना है ना। आपने उस क्वेश्चन को डीपली से आपने उसे एक्सप्लेन करा है ना। मतलब उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसके मेथड्स है, क्या उसकी नीड्स है। हर एक क्वेश्चन को तुमने एक अच्छे से एक्सप्लेन करा, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप जो भी बोल रहे हो एकदम क्लियर बोल रहे हो है ना। और अगर कुछ है लग रहा है कि इसमें कुछ हमने कुछ गलत भी बोला है ना, तो वो भी ऐसे नहीं लग रहा कि वो गलत है। सुन रहे चीज़ों को। ओके सर। तो ये मान के चलता हूँ कि मेरे तरफ से शायद अब 10 की नहीं, शायद 15 लाख तक की पैकेज की हमें उम्मीद करनी चाहिए आपसे, है ना। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि आप इतना अच्छा इंटरव्यू करेक्ट करोगे वाला। ठीक है। और ओके सर, ये एक थैंक यू सर। इंटरव्यू आपका जो है एक सर है हमारे। ठीक है ना, हम्म। नीरज सर है, मैं हम्म। उनसे आपका इंटरव्यू कराऊंगा जल्दी, है ना। शायद इसी वीक में। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा था ये ओके। इंटरव्यू आपका। और इसमें जैसे एक क्वेश्चन था आपका कि मैंने पूछा हाउ टू काउंट रेडियो बटन, है ना। तो जब भी काउंट की आपकी बात आएगी, है ना, काउंट की, चाहे वो रेडियो बटन काउंट करा रहा हो, चाहे वो आपका सेलेक्ट क्लास से काउंट करा रहा हो, कुछ भी चीज़ काउंट करा रहा हो। ठीक है ना। हम्म। तो आपको हम्म। क्या काम करना है, वही आपको यूज करना है कि सर काउंट करने के लिए फाइंड एलिमेंट्स मेथड का यूज करते हैं, और उसे स्टोर करते हैं सर अच्छा। लिस्ट में। ठीक है ना। ओके, और हाँ, वो लिस्ट में पूरा से स्टेप बताना है मुझे। आपको ओके। केवल स्टेप्स बताना है ना। आपको ये नहीं बताना है ओके। कि आप क्या काउंट कर रहे हो, आपको केवल स्टेप बताना है ये। ठीक है ना। ओके, बाकी का हाँ, ओके आपका सर। बहुत अच्छा था। ठीक है। और ओके अब देखते हैं नेक्स्ट सर, आपका। मैंने एक गड़बड़ किया। मैंने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट बोला। सेलेक्ट बटन तो उसमें होता है ना, सेलेक्ट आर्ट तो उसमें होता है, वो रेडियो आपने बटन में। वो आपने रेडियो मैं बटन में कंफ्यूज हो बोला। गई। आपने जब काउंट करना पूछा मैंने कि हाउ टू काउंट रेडियो बटन, तो आप उसमें बोल रहे थे, आप सिलेक्ट, आप गेट ऑप्शन वाला जो यूज कर रहे थे ना, आप रेडियो हाँ। बटन में बोल रहे थे। ठीक है ना। हाँ, इसलिए मैं मैंने कंफ्यूज हो गई, लग रहा है ड्रॉप डाउन में, और इसमें कंफ्यूज हो वो गई। ड्रॉप डाउन को काउंट करने के लिए भी होता है, और आपको, ठीक है ना, अगर ड्रॉप डाउन काउंट करना है तो गेट ऑप्शन का